नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मेरा प्लान नहीं था लाइव आने का इस टाइम पे, बट लाइव आना पड़ा। बहुत कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली हम सब लोग बहुत ऑलरेडी बहुत चीज़ों से परेशान हैं अपनी लाइफ में। चाहे वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से चीज़ें रिलेटेड हों। हम जैसे वॉरियर्स जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में डीपली इन्वॉल्व हैं, डीपली इन्वेस्टेड हैं वो। एंड उसके अलावा अब हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा ही दिलाती हैं। एक अलग तरह का शेमलेसनेस हमें फ़ील कराती है। आई मीन हम लोग बहुत शेमफुल फ़ील करते हैं। इतनी शेमलेसली चीज़ें हो रही हैं हमारी आसपास, हमारे कम्युनिटी में, हमारे खुद के सिटी, स्टेट, कंट्री में, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्ड्स भी मैं ऐसे यूज़ नहीं करना चाहता, बट रियली दीज़ आर वेरी, वेरी शॉकिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और इस टाइम पे सिवाय गुस्से के मेरे अंदर और कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है। येस, आई फील सैड फॉर निकिता। आई रियली फील बैड फॉर हर फैमिली। अ, एक तरफ इसको अगर एक सिक्योरिटी का इश्यू देखा जाए तो येस, सिक्योरिटी का भी बहुत ही बड़ा इश्यू है। फॉर एनीबॉडी, फॉरगेट वुमेन, फॉरगेट मैन, फॉरगेट एनीबॉडी। दिन दहाड़े ओपनली सड़क पे चलते हुए कोई भी कहीं पर कुछ भी कर सकता है हमारी कंट्री में। ये सोच के भी डर लगता है। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी रिश्तेदार हैं। हम लोग भी कहीं न कहीं ऐसे कहीं सड़क पे चलते हुए हम कभी भी सेफ नहीं फ़ील करेंगे। यू नो दिस इज़ रियली, रियली रियली सैड। दिस इज़ रियली बैड कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं हमारी कंट्री में, हमारी कम्युनिटी में। अ, मैंने वो वीडियो बहुत बार देखा। पहली बार देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि एक्चुअल ऐसा हो सकता है। जितनी बार देखता हूँ उतना ही ज़्यादा और गुस्सा आता है, उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता हूँ और उतना ही ज़्यादा सॉरी फ़ील करता हूँ अपने अपने लोगों के बारे में। अ, आई एम स्पीचलेस। आई एम रियली एक एक कि ऐसी चीज़ें आज के डेट में भी हो सकती हैं। हैट्स ऑफ टू मिस्टर ओपी सिंह जिन्होंने कल्प्रिट्स को पकड़ लिया। और ये क्या चल क्या रहा है। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है हमारी? कौन है रिस्पॉन्सिबल? अगर आपने इसको अगर मैं फिर वही रिलेट करना चाहूँ, क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही भी रिस्पॉन्सिबल है? उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ का मैंने जब ये पहली बार ये वीडियो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का सीन। ये सब कुछ मूवीज़ में ही देखा था अब तक, जो अब एक्चुअल होता जा रहा है। हर चीज़ बॉलीवुड की सारा अ, अगेन आई डोंट नो। अ, I really feel sad for anybody walking on the streets without any fear। वो आज की डेट में पॉसिबिलिटी ही नहीं बची है। अ, पता नहीं। यस, जैसे कि लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर रहने से कुछ नहीं होता। यू नो व्हाट? यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। दिल वहीं कनेक्टेड है, दिल इंडिया में ही कनेक्टेड है। आई रियली फील रियली सैड, रियली एंग्री। ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें? ये लोगों के दिमाग में आती भी कहाँ से है? ये हिम्मत भी कहाँ से आ रही है लोगों में? आई आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई वुड एनकरेज यू, आप लोग भी आएँ, क्योंकि मैं अ, आप लोगों के व्यूज़ भी सुनना चाहूँगा। हम लोग आपस में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बात भी नहीं कर पाते इन चीज़ों के बारे में। तो येस, प्लीज़ गो अहेड। जो लोग पूछ रहे हैं वेयर इज़ विभोर? आपको मैं एक बार फिर बता दूँ,
विभोर से रिलेटेड जितनी डिटेल्स मुझे मिलती हैं वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया या ट्विटर से मिल रही हैं। अभी शायद उनकी पूरी फैमिली आई थिंक दे आर अंडर प्रेशर एज़ वेल, तो मुझे नहीं पता। ही इज़ स्टिल अंडर कस्टडी। जब उनके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम ज़रूर बताएँगे। बट इस टाइम हमारा ये सेशन इज़ अबाउट दिस इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन इन देखा जाए, फरीदाबाद इज़ कंसिडर्ड एज़ द नेक्स्ट मे बी आईटी हब की तरह भी फरीदाबाद इज़ अ वेरी, वेरी लाइक वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, और वहाँ पर ऐसी चीज़ दिन दहाड़े होना, आई एम शॉक्ड। अ, रियली, रियली सैड, रियली आई फील सॉरी फॉर ऑल द पेरेंट्स। वो कितना डरेंगे अब अपने बच्चों को बाहर भेजने में, वो कितना यू नो कहाँ जाएँ? जैसे कि लोग कहते हैं कि चलो इस जगह से मूव होके हम डिफरेंट सिटी में चले जाते हैं, इस सिटी से निकल के उस स्टेट में चले जाते हैं, उस स्टेट से निकल के उस कंट्री में चले जाते हैं। क्या अब सब इंडिया से निकल जाएँ? इज़ दैट हाउ हाउ थिंग्स विल बी? हम लोग कब तक इन चीज़ों को फेस करते रहेंगे? कब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? इट्स रियली, रियली सैड कि वो लड़की जो कॉलेज जा रही थी और उसको दिन दहाड़े और कहने को ये आई कैन रिलेट इट टू द एसिड के जो इंसिडेंट होते थे, एसिड थ्रो करते थे लोग। लोगों के दिमाग में चलता क्या है? क्या हो गया? किसी को ऐसे हार्म करना, आज तक वर्बली बातों में गालियाँ देना, आई थिंक ये हालाँकि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पर शायद हम इन चीज़ों को भी छोड़ के बहुत ही आगे निकल गए, बहुत ही ज़्यादा। और कैसे खत्म होगा? कैसे बंद होगा ये चीज़? आई डोंट नो। इस टाइम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे चीज़ बंद करें हम? किसको सुधरने की ज़रूरत है? किसको सँभालने की ज़रूरत है? किसको समझाने की ज़रूरत है? एजुकेशन सिस्टम, अ, और पुलिस, या अपनी जितनी भी ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करती है, उनके लिए, या एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को, अपने भाई-बहन सबको समझाने की ज़रूरत है। हो क्या रहा है? अ, निर्भया केस हुआ, उसके बाद और इतने सारे केसेस हो गए, और आज दिन दहाड़े ऐसे गोली मारना, ये यू नो ये हो क्या क्यों रहा है? हमें शायद ये सब समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू नो ये कल्प्रिट्स, इनके पास गन कहाँ से आई? इनके पास यू नो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए गन से रिलेटेड या किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड। किसी के हाथ में कैसे भी गन आ जाती है। मैं यूएस में हूँ, यहाँ पर भी बहुत होता है ऐसा क्राइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अब इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गए हैं लोग। लाइसेंसेस होने चाहिए गन्स के, बट एट द सेम टाइम फिर भी यहाँ इंसिडेंट्स होते हैं। पर इंडिया में क्या इतना आसान हो गया? आई थिंक दिस इज़ दिस इज़ दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनजस्टिस दैट कैन हैपन, एंड आई एम वेरी, वेरी सैड। जैसे मैंने कहा, मेरा कोई अ, बिल्कुल भी नहीं था ऑनलाइन आने का, बट दिस हैज़ रियली अपॉल्ड मी टू द हाईएस्ट लेवल। आई मीन क्या हो क्या रहा है? जैसे-जैसे लोग आते जाएँगे, आई एम गोना स्टार्ट टेकिंग देम एज़ वेल। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स। Uh, let me see. Hello, हेलो वरुण जी। hello. हाय। बोले सर, what do you have to say? Thanks. आई विल से जो भी आज हुआ इट वाज अ वेरी सैड इवेंट। और द सैड पार्ट इज इंडिया में देयर इज अ क्लियर डिवाइड, सेक्युलरिज्म एंड सूडो सेक्युलरिज्म. Some people will selectively take up cases of injustice, whether it is from this group or that group. So ये होना नहीं चाहिए, and that kind of damages the real justice. A neutral kind of objective व्यू देखना लोगों ने बंद कर दिया. एंड दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम हमारे इंडिया में.
We should all take back and get out of all the groups and look at from a humanity viewpoint. करेक्ट. और मेरे हिसाब से ये जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड ने इतने लोगों का माइंड इंस्पायर करके चेंज कर दिया ना, दैट व्हेन अ गर्ल सेज नो, दैट मीन्स यस. ये जो दिस इज द प्रॉब्लम. व्हेन अ गर्ल सेज Yep. नो, दैट मीन्स यस. तो नो तो सुन ही नहीं रहे हैं लोग, स्पेशली जो लड़के लोग हैं. All of them get inspired by these so-called crooked Bollywood stars. जो कैरेक्टर वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, they are brainwashing everyone, Right. and that is affecting the society negatively. We should stop. I mean, they do not take responsibility here. They will come out about other issues, but they will not say anything in this case. I guarantee you, nobody will come out and say ये जो हुआ wrong हुआ. Right. आई थिंक मैंने भी जैसे कहा, आई पर्सनली हैव स्टार्टेड फीलिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, आई एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं फ्रॉम बॉलीवुड. जो हम देखते हैं वही हम करना भी चाहते हैं. आज की डेट में अगर मैं पीछे जाऊं, वो गिटार पकड़ के बैठना, हमें मूवीज में ही सिखाया गया कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार पकड़ो, राइट. उसके बाद अगर लड़की मानती नहीं है तो एक लॉजिक दिया जाता है कि हर लव स्टोरी एक लड़ाई से शुरू होती है. तो लोगों Yeah. को लगता है कि एक लड़की को थप्पड़ मारना या लड़की से थप्पड़ खाना, मतलब बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग. ये सब आई थिंक बॉलीवुड का इज वेरी हेविली इन्वॉल्व इन इन्फ्लुएंसिंग अस. और आई थिंक उनको भी ये सोचना चाहिए, कि हाउ दे कैन नेगेटिवली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट एनी ह्यूमन ब्रेन. Yeah. एनीबडी कैन बी इम्पैक्टेड. तो आई थिंक वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उनको कि जो दिखाएं जैसे दिखाएं, इट शुड नॉट ब्रेन वॉश पीपल. और आज की डेट में इतना ब्रेन वॉश हो चुका है, जैसे मैं वो भी बता रहा था कि ड्यू टू कोविड बहुत सारे लोग हैं जिनको दे हु लॉस्ट जॉब्स, हु हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे आर नॉट इवन इन देयर राइट फ्रेम ऑफ माइंड. तो उनको भी नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहे हैं. प्लस ऑन दैट एड टू दिस, the kind of unemployment, the kind of hunger, personal issues, वो सब एड अप होके एक एक किसी को ये भी कुछ भी करने पे. बट ऑन टॉप ऑफ दैट, having access to guns and all these things is really tragic. And उसका एग्जाम्पल सामने आज आया है इतना बड़ा. क्वेश्चन है ये, वरुण भाई. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे कॉमन कोई भी आप इंडियन कोई भी कॉमन मैन लेंगे ना, तो गन तो दूर दूर से वो लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे. Yep. तो ऐसे कैसे लोग गन लेकर आ जाते हैं, उनको गन मिल भी जाता है और वो लोग गन यूज करने में दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट. Yep. और मस्ट सबसे बी बड़ी बात एक और. पावरफुल कनेक्शंस एंड दे डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर. करेक्ट. यप. और मैं वही आपको एक चीज और बताता हूँ, नॉट अ वेरी प्राउड थिंग टू से, बट यहाँ पर स्पेशली अगर आप किसी और कंट्री में जाओ, यूएस में, यूके, हम आई एम श्योर हर जगह, there are places where they can give you pay money and then you can try out different guns and all that stuff. बाहर मैं फिर भी थोड़ा सोच सकता हूँ कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि गन को चलाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है. द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दिस प्लेस जहाँ पर हमें ट्राई करने को होता है, आई कुड नॉट. आई लिटरली, एक तो गन पकड़ते ही डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है. हर किसी के हाथ में होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात. बट उसको चलाना आसान नहीं है. उसको किसी भी गन को, इन लोगों को कहाँ से आता है? ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट पहले इन्होंने सोचा, जाके गन उठाई और चलो कर दिया फायर. ऐसा it is practically impossible. So they are all well trained. They know how it works and everything. और इतना easy access. I think this is really tragic. बिग क्वेश्चन, ये लोग कहाँ से ट्रेनिंग इनको मिल रहा है, कौन Yep, इनको ट्रेनिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? absolutely, absolutely. क्योंकि ये, yeah, I really I'm out of words today. सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील.
You are mute. You're mute. Sunil ji, you're mute. Sunil ji, we can't hear you. You are mute. Okay. I can't. We really can't hear you. I'm with SSR. Hi Varun. Hello. Hi, Bharat of Future. Hi Sunil ji. Mm, this is quite a disturbing incident, and I'm seeing that this is becoming a recurring pattern in India. Like people who think they are sort of invulnerable because of uh, some sort of feeling or social acceptance that they feel that their actions have. Like people feel that uh, this is a kind of like what feminists call patriarchy, that I will like borrow chances on ladies, and if they don't, as you just said, that it's a kind of a warped mentality that sort of has taken root in young boys of our country, even in some cases young girls. So I don't know like this disturbing trend is precisely disturbing because like we don't know how to sort of tackle it as of now. We need some kind of education at the grassroots level to just sort of orient people as to what is socially acceptable and what is not, no matter what the film industry says. Like this is basically, this is targeted harassment, Yep. right? Like you targeted harassment, that if you be uh, must be accepting of my infatuation, you must be accepting of my advances. This is absolutely basically I call बोलते हैं it. ना जानवर type I call behavior. it stupidity. I call it stupidity. I mean, stupidity is a light word here. I want to add here, I think killing a person, a human, is a very scary thing for anyone to do. And what I feel is this Bollywood has desensitized, बॉलीवुड ने इतने लोगों को मारते 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 मतलब डिसेंसिटाइज कर दिया माइंड बहुत लोगों का. Yeah. तो मारने के पहले वो लोग सोच ही नहीं रहे कुछ. इट इज लाइक अ गेम. Yeah. टिकट दबाया, मार दिया, खत्म हो गया बात. Yes, and people are putting some comments, right? I mean, I'm gonna show, call it whatever you want to call it, right? They want to call it love jihad. We are not. Nobody is kind of cream coating it. We really don't want to, but at the same time, uh, other people, like, I still don't have any validation of this, but getting any kind of political affiliation, getting guns because you know somebody in some political party is no reason, no excuse. ऐसे guns अगर मिलने लग गई किसी को भी, तो I think ये तो, our community will not be safe at all. I mean, आप कहीं पर भी नहीं जा सकते फिर किसी से 2 मिनट बैठ के. I still remember back in my early teens, या उससे भी जब मैं छोटा था, हमारे, मैं पंजाब से हूँ, वहाँ कुछ जगहों को बोलते हैं शामलाट, जहाँ पर कॉमन जगह होती है, जहाँ पर लोग आके बैठ जाते हैं, आराम से बात करते हैं, लोग फील वेरी फ्री टू टॉक एंड डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग. राइट नाउ जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कभी फ्रीडम से फ्रीली वो वॉक कर सकते हैं. आज की डेट में, in this day and age, people say we should make certain cities 24 by 7, like open. 24/7 तो छोड़ो यार, दिन के टाइम में भी सेफ नहीं है, तो 24/7 रात को तो भूल ही जाओ कि खुद भी कोई निकलेगा. तो हो क्या रहा है? एंड दिस इज रियली 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 ट्रैजिक. अभी तक मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा. वीडियो देख के भी, जितनी बार भी देखो उतने के बारे में पढ़ो कि इतने यंग, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, जब उन चीजों को छोड़ के ये लोग किन चीजों में घुस गए हैं. रियली बैड. बहुत सारे और सजेशन भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली. या कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जो Yeah. अक्यूज है, which is always a possibility. Yeah.
वरना हालांकि कोई गन ऐसा लेकर घूमेगा नहीं. राइट. और एक चीज और, ये एक बड़ा कॉमन, लेट मी जस्ट फ्लैश दिस एज वेल. हालांकि आई रिस्पेक्ट माई कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स गाइडलाइंस सेट फॉर ईच वन ऑफ अस, बट अब इतना गुस्सा आ चुका है कि ये जो फीलिंग जो इंजीनियर विजय ठाकुर की है, आई थिंक ये हर एक इंडियन, हर एक सिटीजन की है, कि ऐसे लोगों को लिटरली, दे द फास्टेस्ट कोर्ट पॉसिबल, दे शुड जस्ट बी, executed. They don't deserve a second chance, unfortunately. That's my feeling. uh, Naushir ji, please, आप क्या कहना चाहते हैं? You are mute. You are mute. What? No, Yes, go ahead. I'm not mute. Yeah, go ahead. अब सुन रहे हैं हम. Yeah, what I was observing through the couple of years is that other than the Bollywood mafia, we also have mafia in the legal system. They're taking the constitution for a ride. Like if you can see how Kapil Sibal and others manipulate on making the judges. Do you get what I'm saying? Yep. So many things need to be cleansed. Yeah. Ethnic cleansing, this is happening, but not just Modi can do it. If you can understand the 2019 election, which was about to happen, they all got together just to oust Modi. Right. So all I the know. baddies A got lot of together. cleansing needs to happen. जैसे एनके सूद एक वर्ड यूज करते हैं, मंथन. उन्होंने कहा था मुंबई मंथन चल रहा है because of SSR case, but now I've started feeling this is more like a entire country, entire world, उसकी सफाई होने का Entire टाइम आ world, गया. in fact. You are Yes, right. Why? Because absolutely. it is only SSR who is holding the torch to unite us together. And I feel it strongly now that SSR sacrificed his life to save so many people from human trafficking. Yeah. His main cause is human trafficking should stop. Yep. And I And don't I know how think, many of you will believe me, but I am into spiritual practices, and there are times where I have you heard of clairaudience? no, I haven't. Okay, clairaudience is very similar to clairvoyance. In clairvoyance, you can see things which are invisible. Uh-huh. All right. In clairaudience, you actually get to listen to somebody, whereas the physical person is not there, even though. So Okay. indirectly, I am communicating with SSR from time to time, which I haven't told to anybody till now. Okay. And when you're into deep state of meditation or in silence, it happens that somebody is communicating with you. In case your awareness is to a higher frequency, you are tuned to it. So I am taking it very low lyingly. I haven't mentioned it to anybody, even on the Facebook, Okay. except for a few rare people in the close knit friendship. So this is there. I mean, he he literally sacrificed his life, not even bothering that he said it once or twice probably in the last couple of speeches that he had made that I want to hold a press conference. I want to hold a press conference. Nobody has paid attention to those videos. Why is CBI not taking cognizance to this sequence of events which he spoke publicly, directly or indirectly, and the institutions of government forces? Here, everyone is involved. The police is involved. The government is involved. In fact, did you see the speech of Son of Tiger? Why I call him Son of Tiger, you can understand. The chief minister is the son of Tiger, right?
You guys are listening? Yes, yes. Yeah. Yeah. So the baby penguin, they know about it that baby penguin is directly involved. So indirectly, he's trying to, defend his government and his family. And he had to, open up and say, oh, so Narayan Rane and Nitish Rane both went on Republic TV to pinpoint to that speech. So they are actually now utterly scared. The only thing is there is a very big amount, like Vibhor had told us, very, very big amount is being pumped in by the ISI and Dawood gang into Bollywood and to save Maharashtra government. Because here Sharad Nushri, Pawar is I think, involved, Italian yeah, witness. Sorry? I think let's wait for some evidence to come out around that. There have been a lot of things said and done around that, but I think putting up certain things like this with no concrete evidences might put yourself at risk as well, is what I can say right now. Yeah, I can understand that, but then this is we are gathering the pieces of the puzzle. I am not trying to Correct. Right. levy allegations on anyone. It is Yeah. No, I how would you join suggest, the pieces just of for the your puzzle. safety as well, I would really Yeah, play I very, totally very agree. safe. Yeah. Yeah, in fact, So my let's. family members they always keep on reminding me, don't put yourself at risk. You are Yeah. staying by We are yourself. also your family. That's why I'm also suggesting, right, at this point of time, I think Yeah, our safety is of highest importance right now, because highest things can importance. go wrong any moment for anybody. So let's not Yeah, let's yeah. not do anything that can put ourselves or our families at risk. I think that's what. But yeah, unfortunately, what's been happening around things which happened in Faridabad. I think I really Yes. feel sorry that this is the state of affairs right now, and kuch to karna padega. Somebody has to, I think each individual has to act now. It's no more about No, the government agencies and all that. it's not just about drug or Sushant Singh Rajput only. They are Yeah, killing the sadhus left, right, and center. right. This is the initiation of Ghazwa Hind, directly speaking. Got it. And now the Kesaria Vahini and everyone is waking up. Yeah. People are uniting. Okay, I will take next. Yeah, Thank you so much, Naushad ji. let's take the call. Always good to talk to you. uh, yes, Thank you. Deepak, please. I was also like disturbed, though I'm not well still. I thought let me come live with you and share my views because it's like a very sad incident. बट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ ना वो ये बोलना चाहता हूँ कि ये गलती जो है ना ये हम लोगों की ही है, जो ये इश्यूज हो रहे हैं ये हम लोगों की ही है, क्योंकि हम अलाउ करते हैं ऐसा इंसिडेंट जो है क्योंकि हम देखते हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो हम पास से निकल जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं, अपनी सेफ्टी देखते हैं. अगर हमारे में हिम्मत होती है ना कि घुस के 2 बजा देते या लठ मार के या पत्थर वत्थर मार के घुस जाते अंदर, अगर 4 बार ऐसे इंसिडेंट होगा तो किसी की औकात नहीं होगी किसी को ऐसे छेड़ने की. मुझे ये जो है मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि बड़े सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे जो है बड़े बड़े सारे लोग बच सकते थे अगर जो आसपास की जनता है अगर वो कुछ एक्शन लेती, अगर उनको बचाती. बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं और मैं आपको फैक्ट बात बता दूं, आज ये न्यूज जो है टीवी में है, 2 दिन बाद आपको दिखेगी ही नहीं. वो अरेस्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता. ऐसा अकेला केस तो है नहीं, 4-5 केसेस जो है मैंने देखे हुए हैं जिनकी क्लियर वीडियो फुटेज है जो है चाकू घोंपता हुआ और पता नहीं क्या क्या करते हुए. बट स्टिल लाइक द प्रॉब्लम इज विद इन अस. मोदी जी और कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. वो थोड़ा कुछ करेंगे. लोकल जो बंदा वहां से गुजर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार. तुम ऐसा होने कैसे दे रहे हो? जब हम यहाँ पे बैठ के जब हमारा खून खौलता है कि यार अगर मैं वहां होता तो जो है मैं एक आधे को तो मार ही देता कि यार ऐसे कैसे जो है किसी को आपने गन शॉट पे उड़ा दिया. जो भी था, पॉइंट मेरा ये है कि हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा. हम लोग अगर ऐसा इंसिडेंट देखते हैं तो हमारी औकात होनी चाहिए कि हम जाके घुस जाएं. हमारे अंदर इतना गुर्दा होना चाहिए, इतने दम होना चाहिए कि यार
ठीक है मैं एक इंसिडेंट के लिए सही बट फाइट करूंगा. आई विल नॉट हैपन एनी वुमेन फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनीबॉडी फॉर दैट सेट. बहुत सारी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब सर्च करो आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी ऐसे लोगों को मारते और लोग साइड से निकल रहे हैं या भाग रहे हैं. यार कोई बीच में क्यों नहीं घुसता है? घुसो ना यार, दीपक, बचाओ उनको. इस पे मैं ऐसे जरूर इंसिडेंट कमेंट तभी बंद हो. इस पे मैं जरूर कमेंट जरूर करना चाहूंगा. एज मच एज आई लव द एनर्जी जिससे आप ये बात कर रहे हैं, बट फ्रैंकली I'll be realistic as well. और again I'll say I could be 100% wrong in this, but जब कुछ ऐसा होता है हमारे आसपास भी होता है, राइट, और इतने लेवल का कुछ होता है, एवरीबडी फेयर्स फॉर देयर फैमिली लाइफ, फॉर देयर लाइफ, और वो होता है और वो शायद आगे भी होगा. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी आइडियोलॉजी थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको अलग कहता हूँ क्योंकि आई थिंक अगर हम अपने घरों में, अपने अपने खुद के घरों में लोग बच्चों को अच्छे से समझाएं, चीजें सिखाएं, आई थिंक दैट माइट हैव अ बिगर इम्पैक्ट. क्योंकि ऐसे जो जो इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर, जैसे आपने बोला, राइट, कि जहां हो रहा होता तो मैं पत्थर मारता या लठ मारता या मैं कुछ करता, उस मोमेंट पे ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ, उस टाइम पे ना दिमाग बंद हो जाता है. उस टाइम पे जब ये सब सामने हो रहा होता है ना, उस टाइम पे सबको होता है कि यार इस टाइम भागो. आई थिंक वो भी एक गलती है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत नहीं है, पर वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. व्हेन देयर इज फियर अराउंड यू, फर्स्ट जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो होता है ना, वो होता है टू रन, टू एस्केप. वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो बॉडी से हमें किक इन होता है. हमारे दिमाग में सेल्स वही रिएक्ट करके जवाब देते हैं कि व्हाट, गो सेव योरसेल्फ. ऐसा आई थिंक वाइल यू आर 100% राइट, ऐसा करना चाहिए. हर किसी को अंदर इतनी हिम्मत नहीं भी होती, पर आई think that is one of the things. But I think if we educate our kids, if we train our kids, जैसे अभी हमारे ये चैट्स में मैं देख रहा था, we should train people to be self sufficient. वो ऐसे मोमेंट्स में कैसे एक्ट करना, रिएक्ट करना, वो सब चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सिखाना. सेल्फ डिफेंस, हमारी कंट्री में एक ये भी बहुत रहा है, शुरुआत से, अनफॉर्चुनेटली, कि जैसे लड़की होती है तो लड़की को कहा जाता है कि तू किचन देख, तू कुकिंग देख, तू ये सब, सेल्फ डिफेंस के बारे में उनको नहीं प्रमोट किया जाता. और लड़का होता है तो बाहर जाके खेलो और ये करो और वो करो. वो साइकोलॉजी है which needs to change. But at the same time, I think the time has changed. Time has really come where be it a girl, be it a boy, हमें act, जब ऐसी कोई situation आती है, we really need to act more sensibly, और कुछ action तो लेने पड़ेंगे. जैसे अभी एक देखो मैं comment आया था. आपको बताता हूँ वरुण, मैंने ऐसे एक दो इंसिडेंट देखे हैं और मैं एक दो इंसिडेंट में ऐसा घुसा भी हूँ और दो जगह मैंने अलग अलग एक्ट करा. मैं जब अपनी फैमिली के साथ था, मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, अगर मैं घुसा तो ठीक है, मेरी फैमिली को भी हैम्पर हो सकता है. मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली 100 नंबर पे फोन मिलाया लोकल पुलिस को और आगे जाके बोला कि भैया यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, आप जाके रिपोर्ट करो या मैं आपके साथ चलता हूँ. सो ये एक्शन मैंने तब लिया जब मेरे साथ मेरी फैमिली थी. एक इंसिडेंट ऐसा था जहां पर मैं अकेला था और ऐसा इंसिडेंट हो रहा था और मैं अपने आप को जो ना आज तक अपने अंदर एक प्राउड फीलिंग ये मानता हूँ कि मैंने एटलीस्ट एक या दो लोगों की तो जिंदगी बचाई है ऐसे मामलों में घुस के. वो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है अपनी जिंदगी बचा ली, बट जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, जब मैं उनकी फैमिली मेंबर से मिला, बाद में बात हुई, उन्होंने थैंक यू के लिए मेरे को कॉल किया, तो मेरे को लगता है कि यार एटलीस्ट मैंने इन लोगों की जान बचा ली. वो मेरी लाइफ में ना जिंदगी भर के लिए एक प्राउड मोमेंट रहता है. वो ठीक है कि हमें जो है अपने आप को बचाना चाहिए, बट वी हैव टू टेक ए वाइज डिसीजन. अगर मैं अकेला हूं, अगर मेरे में दम है रोकने के लिए तो मैं रोक लूंगा. मैं यार यही तो एक रीजन है जहां पर दूसरे लोग सोचते हैं यार जनता तो भागेगी, यार जनता नहीं भागेगी, जनता बम्बू दे देगी आगे, आप करके तो दिखाओ. तो ये जो है ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते. कल को ये इंसिडेंट जो है किसी के साथ भी हो सकता है, कल को इंसिडेंट मेरे साथ हो सकता है. जब मेरे को कोई जो है मार रहा होगा तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा भाई कोई आके मेरे को बचाओ. और उस समय अगर कोई ये सोचे कि यार नहीं वो पहले अपने आप को बचाएगा, अगर मौका मिलेगा तो मेरे को बचाएगा, सो आई एम ऑलवेज हेल्पलेस. तो ये चीज फीलिंग नहीं होनी चाहिए. मेरे को लगता है जब आपको मौका लगे तो आप ले लो बंदे के सामने, अगर आपके में दम लग रहा है तो. अगर आपको लगता है कि फैमिली के साथ हो, ठीक है, आप रिपोर्ट करो, इमीडिएटली रिपोर्ट करो.
राइट। तमाशा मत देखो, बस मैं ये आई नो, बोलना एक चाहता हूँ। एक ये भी एक प्रॉब्लम है, रिपोर्ट करने वाला, राइट? लोग उसमें भी डर जाते हैं। मैं जरूर ये कहूंगा कि सेफ्टी जहां आपकी इम्पोर्टेंट है, बट आवाज को रोकना एंड कंप्लेंट ना करना, आई थिंक वो बहुत बड़ी कायरता है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली सारे इतने स्ट्रांग हो, आई कंप्लीटली एग्री। बट अगर आवाज भी आप बंद कर लेंगे किसी डर की वजह से, देन यस, देन इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट आई कैन अगेन अंडरस्टैंड, कुछ लोगों की साइकोलॉजी, कुछ लोगों का इनहिबिशन क्यों होता है। बट yes, you're completely, I completely agree. If you have the capacity, I think you should not stop. चाहे उसी टाइम उसी जगह पर जो भी करना है, you should take an action. I completely agree. And kudos to you. मुझे आपके बारे में ये नहीं पता था, तो good to know कि आप जैसे लोग उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे एक्शन भी लेते हैं. I think that is also very important. So thank you for sharing that with us. विभांशु, प्लीज चलो, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू दीपक। हाय हाँ जी, वरुण, आप ही बताइए किस टॉपिक पे बोलूं, क्योंकि मेरे पास अभी अलग अलग इमोशन चल रहे हैं। जो भी अगर आपके मैं दिमाग पे है, जो भी आपके दिमाग सीधा में है, बोलो। नहीं, क्योंकि अगर आपके टॉपिक पे जाए तो आपने लिखा निकिता तोमर, एसएसआर और वुमेन सिक्योरिटी, तो ये सीधी बात एसएसआर हो चुका। कुछ नहीं, हम बैठे हुए हैं, बड़े मीठी मीठी बात कर रहे हैं। क्लियर ऑफ पॉइंट्स, हम किसी में प्रवेश करके उसके बारे में जानेंगे। अभी कोई सज्जन बोल रहे थे। और निकिता जो आज हो गया है, और वुमेन सिक्योरिटी ऐसा ही चलता रहेगा, तो ऐसा ही होता रहेगा। किसी ने भी आज तक हमें ये तो सिखाया नहीं है भैया, तीन तीन इमोशन होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। जो मेरे पहले बोल रहे थे उनको, वो जो बोलना चाह रहे थे, एक होता है फियर, एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट। आदमी को जैसा सिखाया गया वो उस समय वैसा ले लेता है। सबसे पहले तो मन में डर बैठा दिया जाता है, भैया ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं, कीप अवे फ्रॉम देम। दो लड़ाई हो रही है तो सबसे दूर रहना, ठीक है? तो आपको फियर एक नंबर कर दिया जाता है, और उसके बाद दूसरा सिखाया जाता है बच के निकल जाना, तो फ्लाइट हो जाता है। फाइट तो रहता ही नहीं है। तो ये जो पिछले 300-400 साल की गुलामी का असर हुआ है कि पहले फियर, फाइट, फ्लाइट और फिर फाइट होता है, तो फाइट तो आता ही नहीं है। अब तो यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा तो हो जाएगा, हिंदू वाली बात हो जाएगी। इस मामले में तो हाँ, जो भी केसेस हो रहे हैं, आप देख लो, एक फोटो बन जाता है तो गला काट दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, उल्टा फ्रांस बाइकआउट होने लगता है। तो मैं तो आज दूसरे इमोशन में हूँ। ये बहुत ही फालतूगिरी चल रही है। हम लोग को बनाया ही ऐसा गया है भैया, कंचे खेल रहे हो तो गलत आदमी हो, जाके पढ़ो, आइंस्टीन बनो। तो आज देखा है, निकिता वो टॉपर थी, 95% था, और पिछले 3 सारे सेमेस्टर में टॉप की थी, लेफ्टिनेंट बनना था उसको। राइट। तो मैं अब नया चीज़ सीखने मिला कि और नंबर लाइए, गलत बच्चों के साथ नहीं रहिए। इससे तो अच्छा आप हॉस्टल में हमेशा रखिए 2 साल बच्चों को, थोड़ा लड़ना पीटना और समझना सीख जाएंगे दुनिया में। क्योंकि ठीक है, अब कोई बंदूक लेके आ जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना मुझे जरूर पता था कि अगर उस समय डर बड़ा नहीं होता ना, तो एक लड़की को भी पता है कहाँ पे पैर मार देने से सामने वाला गिर जाता है। लेकिन आपको कभी, एक वीडियो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, किसी एड वाले ने बनाया था कि कैसे दिमाग आपका दबाया जाता है। उसमें था कि बहुत सारे 5 इयर्स, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ। हाँ, बहुत सारे अप टू 5 इयर्स ओल्ड लड़कियों को लाके बोला गया कि चिल्ला के दिखाओ। उन्होंने चिल्लाया, दौड़ के दिखाओ, मार के दिखाओ, उन्होंने किया। और फिर वही +14 से बोला गया लड़कियों से। ये लड़कों पे भी अप्लाई होता है। बहुत लड़के हैं जो घर पे ही रहे हैं, उन्होंने तो दुनिया बाहर से उनको सिंपल, अच्छा सोबर बने रहो। लेकिन जब उन्होंने 14 इयर्स प्लस वाली लड़कियों को बोला चल दौड़ के दिखाओ, फुल स्पीड से मार के दिखाओ, फुल स्पीड से चिल्ला के दिखाओ, तो सब कुछ चेंज हो चुका था। तो ये चेंज बिहेवियर में कहाँ से आता है? और वही। यही चेंज जिसने आज वो गोली चलाई थी उसके पास क्यों नहीं था? परवरिश सिर्फ एक ही तरफ होती रह गई क्या? अपने बच्चों को सिखाओ, अपने लड़कों को बोलो, अपने, अरे हमेशा एक साइड क्यों बोलते हो भाई? और ये नाम लेने में लोग को डरता है, और शुरू हो जाते हैं इस्लामोफोबिया हो गया वर्ल्ड में। अरे भाई, तो मुझे भी बता दो ना कि दूसरे किस बड़े आतंकवादी का नाम क्रिश्चियन है या हिंदू है, बता दो मेरे को भी। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि हम लोग बचते 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 इतना बच गए हैं कि एक बार उनकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप बचने लायक नहीं रहोगे। आज फ्रांस ने बड़े दिल खोल के सबको बुलाया था, आज हालत देखिए। दे आर नाउ 10% ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर रूइनिंग। एक खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये जैसी मेंटेलिटी है उस हिसाब से फिर आपको कभी ना कभी तो वापस सुनना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है, एक बहुत बड़े थेसिस लिखा गया था कि व्हेन दे आर लेस देन 1% क्या करते हैं, व्हेन दे आर 2%, व्हेन दे आर 5% एंड व्हेन दे आर 10%, और वेयर दे आर 100%, यू कैन सी सीरिया। तो दिस इज इननेट क्वालिटी। आई कैन स्पीक अ लॉट, लेकिन ये मेरा
आज मुझे लगा ये एसएसआर ठीक है, वी आर डूइंग इन ए सिविलाइज्ड मैनर, लेकिन जब कोई बचने की बात करता है कि ये वर्ड नहीं लेंगे, इस्लामोफोबिया नहीं बोलेंगे, लव जिहाद नहीं बोलेंगे, नहीं तो वी आर नॉट सेकुलर्स, व्हाट, जिंदा रहोगे तो सेकुलर रहोगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। फ्रांस बाइकआउट फ्रांस प्रोडक्ट्स कर रहे हैं लोग, और कर कौन रहे हैं जो खरीद नहीं सकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बाइकआउट फ्रांस, वो अपना देश बचाएगा या बैठ के धर्म जाति गिनते रहेंगे। तो आप नेक्स्ट पे चले जाइए, मैं दूसरे नहीं नहीं पॉइंट पे आता विवांशु, हूँ। आई थिंक you're hitting it at the right spots, बट कई बार होता क्या है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे एक इंस्टिगेशन होती है, राइट? इंस्टिगेट जब होते हैं लोग, तो कुछ लोग राइट डायरेक्शन में चले जाते हैं, पर कुछ लोग जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और वो कुछ इसीलिए गलत मैं एक स्टेप्स ले पॉइंट, लेते हैं। आई थिंक हमें उन लोगों वरुण जी, को भी। वरुण जी, जिनको हाँ, भी बुरा लग रहा है, एक चीज बोले। मेरा गुस्सा इस बात पे और है। मैं बिहार में हूँ, यही मुंगेर है, पास में ही। आज सुबह सुबह मैंने देखा है कि पूरी पुलिस मिलके, कुछ लड़के जो दुर्गा पूजा की मूर्ति ले जा रहे हैं उस पर इस तरह से मारा है कि मतलब वैसे लाठी चार्ज में भी नहीं मारते हैं। तो यहाँ तो बात रहे दीजिए हिंदू मुसलमान कौन करे, यहाँ तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को आदत कौन सी होगी, हम क्या देख रहे हैं। मतलब दे वे आर गोइंग फॉर द प्रोसेशन कि भाई विसर्जन करने जाना है, और चुनाव अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मे बी पुलिस वाज देयर। ठीक है, कुछ लड़के थे, हुड़दंग किया होगा, बट इफ यू विल सी दैट वीडियो, इस तरह जिस तरह मारा है, तो उस समय तो अपने ऊपर ही है ना कि मारने वाला भी कौन और मार खा कौन रहा है। तो एक्चुअली दिस इज ऑल गोइंग केओस कि जो जहाँ पे थोड़ा भी पावरफुल दिख रहा है, ही इज गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्स। वो कोई फिर सेंसिबल काम नहीं करता है, ये मॉब मेंटालिटी बोलते हैं। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट एरिया एट दैट टाइम, वो अब जैसे भीड़ का जो आजकल आपने देखा होगा जस्टिस, अगर वहाँ कमजोर कमजोर दुबले पतले 20 लड़के इकट्ठा हो गए, तो दिल्ली में दुबले पतले लड़कों ने एक लड़के को अभी मार दिया था, वो भी ऐसा ही कुछ केस था, ट्यूशन पढ़ने लड़की जाती थी और जो भी, लेकिन उनके पास अकेले होते तो वो हिम्मत नहीं थी। एक्चुअली ये हिंदुओं मुस्लिमों वैसे होता ही नहीं है। जैसे ही मॉब होता है, जैसे ही लोग को लगता है अब हम सब भीड़ में है, तो एक हल्ला होता है और हल्ले के साथ वो सारे के सारे आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं यही बस सोच रहा था कि ये मॉब मेंटालिटी या तो कमजोर लोग मिलके इकट्ठे हो जा रहे हैं, और या फिर जैसे ही कुछ लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं वो अपने आप को स्ट्रांग समझने लग जा रहे हैं। I agree. Arjun, yeah, मैं यहाँ पे Dak, anybody else? ये मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा विवांशु, आपने जो बोला ना, यहाँ पे कोर इश्यू जो है ना, वो है पावरफुल एंड पावरलेस। जो कॉमन लोग है ना, हम लोग सब पावरलेस हैं। वी आर नॉट अलाउड टू कैरी वेपन्स लीगली। बहुत कम लोगों के पास लीगल लाइसेंस है। और ये जो गुंडे हैं, बहुत सारे जगह पे पॉलिटिकली सपोर्टेड जो लोग हैं गुंडे, वो सब गुंडे के पास वेपन्स भी हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड कुछ भी करने का मतलब अलाउंस है। इसको भी मार डालो, कुछ करेगा नहीं पुलिस। इसी की वजह से लोग डर जाते हैं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। और ये सुशांत के केस में भी वही हुआ है। जो लोग पावरफुल हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो लॉ फेल, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर सुशांत से मैं इसको रिलेट करूँ तो वहाँ पे भी ये वर्ड हो जा रहा है, क्योंकि सुशांत के घर में भी पावरफुल लोग हैं। उनका अगर आप कनेक्शंस देखें अपने फैमिली रिलेशंस में, तो भी उनको इतना लड़ना और दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअली ये तो ऐसा हो गया किसी दिन विजिलेंटिज्म पे आ जाएंगे सबको, कि जब हमें भरोसा ही नहीं रहा तो पहले मार देते हैं, या फिर पहले कर लेते हैं फिर केस लड़ते रहेंगे। तो तो आपकी एक्चुअली प्योर ये चल रहा है। सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि अचानक से एक दिन अगर ब्रेक हो गया कि कुछ नहीं होने वाला, तो खुद ही करना पड़ेगा। तो और जिस दिन वो उतरने लग गए लोग, तो फिर ये कहीं पे फिर कोई सिस्टम नहीं रहेगा और कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगी। Yeah, that's the sad state of affairs. But let's listen others as well. Mary Ji, what do you want to say? You are mute. Okay. हाँ जी, Thank बोलें। you, Arun. I have been tuning with your shows for a long time since Sushant's death, and thanks for updating. And I had a question. The question I had was, is it possible to ask CBI to give a update on a bi-weekly basis or something, so that we can be up to date? Like, it's not just dying. No, that Yes, was one. And yes. regarding this incident that happened in Faridabad, I think it should be both
top down and bottom up. Like, top down is like, I think Sushant's case is helping out to weed out all those bad elements in our society. And also bottom up to make sure all these guns are not being, propagated around. And I had to leave because I have to pick up my son. But Sure, all the best sure. and thank you very Thank you. much. Thank you so much, हाँ जी. I'll try to respond and I'll let others speak as well. So ये जो CBI का हम सब लोग भी वेट कर रहे हैं कि if we can get some kind of updates. Unfortunately कहें या जो भी कहें, as told to us by a lot of officials and unofficially जो लोग किसी capacity में हैं, uh, क्योंकि this is a high profile case and anyways this is with CBI. CBI is not at this point of time accountable to come out and say anything till the time, जैसे कि हमें मिस्टर सूद ने भी एक बार बोला था कि अगर वो आके कुछ बोल भी देते हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कवर अप करने की और एक डायरेक्शन में जाने की, और वो नहीं करना चाहते सीबीआई. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस. सो ऑल आई हैव टू से अराउंड दैट इज, लेट्स कीप सम ट्रस्ट ऑन सीबीआई. आई थिंक उसके अलावा ट्रस्ट एंड होप, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते किसी भी केस में, राइट? यस, एक टाइम आएगा जब शायद हमारी ट्रस्ट और होप अगर अगर भगवान ना करे टूटे और सबर का बांध भी टूट जाए, तो यस देयर विल बी सम एक्शंस जो हम करेंगे डेफिनेटली करेंगे. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड एनकरेज एवरीवन कि थोड़ा सा पेशेंस रखें. I think there are certain reasons, and I could be wrong, but elections is definitely a very 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 volatile period किसी भी सिटी स्टेट कंट्री के लिए. और उस टाइम पे आई थिंक ऐसे कुछ जो हाई विजिबिलिटी वाले केसेस होते हैं उनके बारे में आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू प्ले अ लिटिल लो. नहीं तो किसी तरह के भी राइट्स हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है. लोग सड़कों पे दे रियली वांट, ऑलरेडी इलेक्शन से रिलेटेड इतनी सारी डायनामिक्स चेंज हो चुकी होती हैं. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस. बट and I also agree to the second point, Mary G, what you said, okay, I think पता नहीं कैसे इसको रोका जाए, बट I think something has to happen, something really needs to happen. ये ऊपर जो बैठे हैं लोग जो कमांड करते हैं और वन वे कम्युनिकेशन जिनसे चलता है, इनको हम ही बनाते हैं, एंड ऑफ द डे. सो वी हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस so that we have the right people on the top. But at the same time, from the bottom up, I think हम लोगों को भी we really need to make sure कि हम अपने राइट्स के लिए बोलें, अपनी चीज़ों के लिए, जैसे अभिज्ञा बोलते हैं, we should learn about our constitution, about our rights. लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को, including myself, we don't even know what are the rights that are available to us. और अगर पता भी है तो उसको एग्जीक्यूट, उसको फॉलो अप कैसे करें, हमें वो भी नहीं समझ आती. तो आई थिंक हमारे ऊपर भी है बहुत ज़्यादा जाता है ओनरशिप कि we should also take certain actions and learn few things. Vishal, what do you have to say? Can you hear me? Yes, now I can hear you. Yes. Right. Jai Hind to everyone who is present here. And Varun, I want to say something with all due respect to the all parents. They know that 2018 में इनके साथ ये हादसा हो चुका है एक बार, और इन्होंने ना उस लड़की से कोई ज्यादा सिक्योरिटी दी, ना ही उसे पेपर स्प्रे दिया. आई वांट टू से समथिंग. शी गॉट मोर देन 30 seconds to react. Now that's a big time अगर कोई आपके ऊपर गन लेके आ रहा है, right? Yes. So I want to say कि उसके पास सारा backpack है and everything is there. But there is one thing which is not there, is awareness. Awareness. Be aware. You have to know where you are, what are you doing, and where are you going. These are the three things you have to remember every time you step out of from your home. I just wonder that this girl, there were two girls. I can say this, that she has got more than enough time to react. I'm not blaming anyone, but I'm just saying कि सारे पेरेंट्स को, सिर्फ हम हिंदुओं को क्या माला पहनाना सिखाएंगे, भाला चलाना नहीं सिखाओगे? कब सिखाओगे अपने बच्चों को भाला चलाना? You have to do this. Nobody wants कि आप
आई एम नॉट सेइंग कि आप हिंसा करो या फिर आप किसी को ट्रबल करो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट एटलीस्ट जब आपकी जान खतरे में हो तब तो अपना सेल्फ डिफेंस कर लो यार। दिस इज अमेजिंग, आई मीन कोई लड़का कोई सनकी आके आपके खोपड़ी में गोली मार के चला जाए, स्टनिंग, दिस इज रियली स्टनिंग। अब उसे ये लोग बिल्कुल कहते हैं, आई वांट टू से दैट दिस इज कंडेमिनल, लेकिन मैं यही बोलूं आम लोगों की तरह कि मैं इसकी निंदा करता हूं। अरे उससे क्या होएगा भाई, एवरीबडी हैज टू अवेयर बिफोर दे स्टेप आउट फ्रॉम द होम। आई वांट टू से दिस टू ईच एंड एवरीवन हु इज देयर एंड हु इज लिसनिंग टू मी। कम से कम अपनी बच्ची को टेक डाउन करना सिखाओ। अगर टेक डाउन नहीं सिखाते हो तो कम से कम ये तो सिखा दो, अवेयर रहो। वहां पे कोई अवेयरनेस नहीं। वरुण सर आपने अगर वीडियो देखा हो, I want to say that she has got enough time to react, and वहाँ पे बहुत लोग थे जो उसकी हेल्प कर सकते थे। I'll let people answer. You Yeah. know, all of them are kind of raising some comments. Yeah, So, sure. I have the interview of his father, her Yep. father also. आप डर का हालत देखिए उसका, जब सब कुछ हो चुका है, उसको जला दिया गया है, सब खत्म है। नाउ न्यूज चैनल्स आर कमिंग विद देयर कैमराज, वो एक एक आंसू का नहीं होता है मेरे सामने, मेरे कैमरे पे रो दे एक बार, दे आर होल्डिंग देयर टीयर्स। वो कोशिश कर रहे थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि ये 2 साल पहले हो चुका है, ये आज जो हुआ वो 2 साल पहले हुआ, तो लेकिन वो पावरफुल आदमी है या नेता का बेटा था, भांजा था, जो भी था, उसने सल्टा दिया, माफी मांग ली। 2 साल से वो उसको तंग कर रहा है। बेटी, अब जब बेटी ने देख लिया कि घर वाले डरे हुए हैं, तो वो तो घर पे कभी बताएगी नहीं। आज उससे पूछा गया क्या पिछले 2 साल में उसने तंग किया, तो लोग को पता ही नहीं है कि कैसे पता चलेगा, वो बाहर खुद से हैंडल कर रही होगी। आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अच्छा, और एक बात, आज जब मरने के बाद पूछा जा रहा है कि आपको लगता है आपने गलती की, आपको बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था, भाई साहब अभी भी नहीं बोल रहे हैं नहीं मैं आज भी नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़े आदमी। नो तो सर तुम यहाँ पे 70-80 साल 200 साल से अगर भरा गया है ना, तो वो आपको निकालने के पहले या तो आपके साथ हो जाए, तब उस दिन समझ में आया। ये वाली हालत हो चुकी है। मुझे दूसरा तो कोई प्रमोट नहीं, मुझे कोई दूसरा चैनल सजेस्ट तो नहीं करना चाहिए, बट देयर इज ए चैनल जेम्स ऑफ बॉलीवुड। वो आपको वो जानते हैं, वो ही स्टार्टेड विथ ए लाइट थिंग, बट अभी आपको समझ आएगा कि पिछले 70 साल से कितने मीठी बात से क्या क्या दिखाया गया है, और आप उसको एक्सेप्ट करते चले गए, तो आज आपको नॉर्मलाइज लग रहा है। तो दिस इज फीडिंग समथिंग इनटू योर माइंड। आप जो पढ़ रहे हैं पिछले 70 साल से, वो किताबें किसने लिखी है, लेफ्टिस्ट ने या कम्युनिस्ट ने, वो अब पता चल रहा है, अब चेंज किया जा रहा है, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमको ये पता है बाबर कब आया था, ये नहीं पता चलता है कि टीपू सुल्तान को हराया किसने था। तो सर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जला दी इन लोगों ने। आप सोचिए तो 3 महीने आग लगी रही है। 3 महीने आग लगी रही। होप ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कर दी। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये सारी कवायद मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, दिस इज ऑल अबाउट गजवाए हिंद। यू सेड इट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन ये गजवाए हिंद की शुरू हो रही है कहानी। आप सबको अलर्ट रहना पड़ेगा फ्रॉम योर माइंड्स, एंड आई हैव टू से दिस कि आप सबको कुछ पता ही नहीं है। जिस आदमी को 5 बार ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारा अल्लाह सबसे बड़ा है, 5 बार ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हें जिहाद इस तरह करना है, 5 बार ये सिखाया जा रहा हो कि कोई और माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, एंड उसके बाद वो मस्जिद में उन्हें इतना मारते हैं। आप देखिए कभी मदरसों की वीडियो, दे आर बीटिंग द हेल आउट ऑफ देम, बीटिंग द हेल आउट ऑफ देम लिटरली, एंड देन वो इतने, क्या कहा जाए, मतलब इतने बेकार हो जाते हैं, इतने आउट स्ट्रीम हो जाते हैं हमारी सोसाइटी से। विनीता, yes, Vinita, please. May I know your name? The check shirt. Vishal. Vishal. I'm going to speak from a woman's perspective, not a Hindu woman, not a Muslim woman, not a Christian woman, just a woman, and I'm angry. You know what? No, I never thought about any. I am just saying about the doctrine. कोई धर्म बुरा नहीं है. Okay, you complete. I'm angry about the fact that this keeps happening again and again and again and again. And you know why this happens? Does any one of you have the answer to why? I'm asking why? Men. I'm asking men. Do you know why this happens? ये उसके अंदर की फैमिली बोल देती है चुप रहो, बताना मत, इज्जत खराब हो जाएगी। ये उसके अंदर की कुंठा है लड़के की, और फैमिली बोलती है, राइट। अगर एसिड अटैक की बात करें हम लोग, कितने एसिड अटैक्स हुए हैं आज तक?
आज सुबह ही हुए हैं, आज सुबह ही हुआ है, आज Yeah. सुबह हुआ है, न्यूज में आ चुका है। Exactly. और उसमें क्या होता है, किसी औरत को एक चीज जैसे देखा जाता है, मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं हो सकती। ये क्या है भाई, क्या हम लोग की चीज है यहाँ पर? Are we a thing on a table that you can claim mine or yours? No, sorry, we are not. We're just another person, on a human being on this planet. Treat us like goddamn human beings. Enough is enough. And it starts at home. It starts at home from the mother, the father, both of them equal. Has nothing to do with Hinduism, Islam, has nothing to do. It starts at everybody's homes. I am a mother of a child, a daughter. It starts at my home, how I raise her, how her father raises her. It starts there. Let's do it right. Let's do it right by our kids. And let's stop this. Let's just stop it for a second about iske book mein kya likha hai, uske book mein kya likha hai. Let's just think objectively. Where does it start? It starts the minute we say you are different from the other. You are different from your brother. You are different from your neighbor's son. That's where it starts. And that's my perspective. Vinita, I want to add here my personal experience. I went to a village in Haryana. Okay. I was part of an NGO work, and we wanted to empower girls in that school. And what I saw firsthand was young boys of same age, 5 years, 6 years old. They are pointing to girls as brainless. They don't have ability to be, be at the same level as them, boys, and Exactly. they are taught by parents, and it has Exactly. nothing to do with religion. Yeah. And that is the problem here. Exactly. I agree with that. I agree with that. But see, the thing is, this is a very tragic thing that has developed in our society. That from the family side there is so much pressure on girls, and there shouldn't be. But we must be fair, and we must know why that attitude has developed in the first place. Though it is absolutely abhorrent, this attitude. Okay, it was a response from the society to invaders who used to come and loot our country. Hang and on. our culture. Are you saying it was a No, response let me complete for now. saying girls are worse than boys? No, that is not. I'm not Okay. excusing that for even 1 second. I'm saying this Okay. is an abhorrent attitude. But the root of it lies in this defensive attitude that we should हमें अपने बेटियों को छुपा के रखना है. And that should have never been. Do anyone knows कि वो लड़का कौन था, कहाँ से था? कोई जानता है इस बारे में? But उसके बारे में थोड़ी details. Now the fact of the matter is, मेवात से है, उनका पूरा एरिया है वहाँ पे, पूरा वोट सिस्टम है उनका. एक सेकंड, let me complete. So the fact is, you complete please. Yeah, the fact of the matter is that it is a very unfortunate thing, and I feel it is a time for re-education in our society to happen. Parents should be re-educated, girls and boys should be re-educated about how to be a functional part of civilized society. But also we must recognize that there is a concerted effort to launch a targeted attack on various fronts on the civilization of India. Look, I'm not denying that. I'm not at all denying that. That came much later, though. To me, no, but you should also recognize who it is who are the groups that are targeting the civilization. Absolutely, I'm not at all denying that part. All I'm trying to say is that even if those were not there, even if you look at a neighborhood that's 100% one community, are you telling me that differentiation between a boy and a girl is not going to happen? Let's say that it's one community, whatever that community is. Okay, let's say it's Hinduism. It's 100% Hindu neighborhood, or koi nahi hai wahan par. It's all 100% Hindu. Can you honestly, with a hand on your heart, tell me that they're not going to differentiate between a girl and a boy? Nope. In their own family, in your family. Nope. Forget the community, Vinita. I would say it happens within the family itself. I cannot talk about anybody else's family, but for me, it has never happened in my family. Mere family mein I have seen it. My parents never did it, but my own chachis have said it.
Why is she Yeah, doing sure. this? I'm She saying that it shouldn't be is a going widespread and talking problem, like this. and no, it goes beyond that. Also, there are far more serious problems that are existing concerning women in our country. Yeah. But but while we work on that also, but we should recognize that they see, the thing is that people say, one thing that I disagree with is that people use this tactic, this argument, to say that there is so much wrong with Hindu society, to sort of deflect from the fact that there is something wrong on the other side as well. Okay, and every time it somehow becomes our responsibility to make peace. So I'm saying there should be some sort of a uniform civil code that should be applicable across the board equally. And now is a time to stop this pseudo secularism business I that puts the personally onus don't think only on one I secularism side. is think the Arjun answer and Vinita, to. I think there are two Yeah, different lines of they're two thought. different things. Yeah, Exactly, to and me. let's Yeah. जो आज का इंसिडेंट जो हम निकिता के बारे में बात कर रहे हैं, No, yes, we secularism. can put that into a particular kind of umbrella, but what we generally want to speak, right, outside of Nikita's case, yes, there will still be issues irrespective of whatever religion, caste, creed, color, and all that. That distinction also needs to change. But आज जो हम निकिता का केस कर रहे हैं, yes, it could be a very specific case of the word that's being used is love jihad. It definitely could be the case of that, but let's not just make that as the only issue. Let's look at the bigger picture, which is really in our culture. हमारे खुद के घरों में भी है, forget girl and boy. I would say if you have two boys or if you have two girls or you have three boys, three girls, whatever be it, we do that. एक distinction हमारे बीच में भी, and it starts from, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, from within us. पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को रेक्टिफाई करके अपनी फैमिली से, and then we go out about in the community, and that's very important. But yes, निकिता के साथ आज जो हुआ, that is very 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 shocking. Very, It makes me angry. It makes me yeah, so angry. I'll it give does. you an And incident. मेरे घर में एक बाई आती थी और उनको वो मुझे एक दिन बोली मेरा ना, और वो मैं मुंबई में बड़ी हुई, वो महाराष्ट्रन थी। वो बोलती मेरे हस्बैंड मुझे रोज दारू पी के मारते हैं आके। तो मैंने कहा कि आप क्यों सह के लेते हो? फिर बोलते मैं क्या करूं, मतलब वो हस्बैंड है ना मेरे, मैं क्या करूं, मैं कहीं पे जा भी नहीं सकती हूँ। मैंने बोला ना, एक काम करना, मिर्ची का पाउडर रखना हाथ में, अगली बार आएंगे ना तो सीधा आंख में मिर्ची का पाउडर डाल देना। मुझे ये बोलने की दिमाग में आई क्यों बात? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि मैं कोई डिफरेंट हूँ मेरे भाई से। इसके वजह से मैं ये सोच भी पाई, मैं बोल भी पाई। वही मेरे खुद के फ्रेंड्स के घर पे ना देखा है, मेरे फ्रेंड्स के घर पे मैंने लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता था, और उसके बाद वो लोग सोच भी नहीं पाते थे ये ऑप्शन। सो विशाल, टू योर पॉइंट, 30 seconds is a long time to react, but to react you need that kind of mindset that you are capable to react. अगर पहले से ये बोल के रखा है कि तुम किसी से कम हो, तो उस वक्त पे तुम्हारा दिमाग में नहीं चलेगा कि I have to react. So that's sort of where I'm coming from in terms of 30-second time. I absolutely said this thing that आपको किस तरह घर में बताया जा रहा है, किस तरह आपका अपब्रिंगिंग हो रही है, that is very important. Yes. मैंने कहा ना, सिर्फ माला पकड़ना, माला घुमाना सिखाओगे बच्चों को, कब सिखाओगे that you got the bones in your body, you can use it. Exactly. You know, with your high supremacy. अगर आप बहुत अच्छे नहीं भी हो यार, you can block him anytime you want it. I just said कि अगर मेरे सामने कोई और अगर 30 सेकंड उसे लग रहे हो अपना निकालने में, and then he is trying to put me on, I will shut the hell down from him. Everything, whatever he got. लेकिन आप ये बात समझो, इनके स्क्रिप्चर्स ही कह रहे हैं आप काफिर हो। ये बात याद रखो। आई एम सॉरी इफ एनीबॉडी इज हियर फ्रॉम देयर, आई एम रियली सॉरी। लेकिन कहाँ आपने सुना है कि किसने किसका गला काटा अभी टीचर का? फ्रांस, टर्की का प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या ये पागल हो गए हैं एनुअल मैकवा के लिए? वाई मैन, कौन से मुस्लिम मुल्क ने अभी तक फ्रॉम टिल टुडे टेल मी कि किस मुस्लिम मुल्क ने शरणार्थियों को लिया हुआ है? कि सीरिया ने लिया? या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जितने भी है, दुबई हो, अरब हो, आप कौन सा मुल्क जानते हैं जहां पे इन्होंने शरणार्थियों को लिया हो? जिन्होंने लिया आज उनके यहाँ बम फट रहे हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो फ्रांस हो, या कोई भी और जगह हो। और जहां पे सीरिया में आप देखो, जहां मुसलमान है
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे हो रहा है. जिस लड़के ने गर्दन काटी वो Vishal, चेचनिया का I था. want to interrupt. Jordan has taken refugees, lot of refugees from Syria. नो या बट एक होता है ना उदारवादी, जो हम और आप हैं, कंपेयर, मतलब उस एक होता है नंबर, देयर इज अ बिग नंबर. उन्होंने काफी नंबर तक लिए, उन्होंने उनकी जान बचाई, और आज क्या हो रहा है? इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज अ फॉल्ट ऑफ देयर स्क्रिप्चर्स, जिनको यही सिखाया जा रहा है, जिनको कट्टर बनाया जा रहा है. आप में से कितने लोग गीता पढ़ चुके हैं बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, so that's a good number, by the way. Yeah. All right. But मैं Okay, मैं सिर्फ गीता नहीं that's a पढ़ती, good मैं number. बाकी बुक्स भी पढ़ती हूँ. I like to be aware about everything. No. Yeah. See, So यहाँ okay. से जो आप सोच के पढ़ोगे, that's Yeah, very from important. here. Yeah. Add one thing. Just add one thing here. Yeah, आपने sure, बहुत sure. आपने बहुत अच्छी बात कही विशाल जी कि there is a concerted effort from one side to create an otherness. मैं आपको उनके बुक के बारे में थोड़ा बताता हूँ. Okay. Now every Friday prayer, okay, every day azan and every Friday prayer has कौम और काफरीन. no, has one very interesting preamble. Every Friday prayer starts with God give me the strength to kill all non-believers. काफिर, वही तो बोल रहा हूँ, कौम और काफरीन पे फतह नाफिज कर. इसका मतलब काफिर आप, कौम हम सब. समझिए ना बात को. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं शरिया की एक बात बताता हूँ आपको. देयर इज दिस लॉ इन दैट शरिया व्हिच सेज a believer may not live in a country which is majority non-believers, okay? Absolutely. Unless he is ruling that country of non-believers. The only other condition, that caveat that law has in the Sharia, is that you can only live in a country which is for majority non-believers, and when you are not ruling it, is if you are doing religious war against that country. Darul Harab, I will give you the word. I know everything about them. These guys are trying to take you down from your religion first. So guys, and I second think is very important, this to kill you or discussion is going in a totally different direction. That's what I was about to say. You and I should talk offline. Yes, I think you guys please take it offline, क्योंकि यहाँ पर हम religion और religious beliefs के बारे में बात करने आए नहीं थे. हम निकिता के बारे में बात करने आए थे. Exactly. उस गुस्से के बारे में बात करने आए थे. This is the reason of thinking why he killed him. I completely agree, and what I'll do is, let's have a separate session. Let's definitely discuss it, because there are a couple of facts, right? I mean, yes, you guys are sharing certain things, but whether they are facts or not, let not make that on this public forum. I would like to look at statistics in terms of like any kind of attack on women, especially because a jilted lover basically lost his school and did whatever he did. If you look at the statistics, let's look at it. Let's really look at the numbers, right? कि उसमें if you're talking about religion, कौन से religion के हैं दोनों side पे? Let's really look at it and then discuss it, because let's do a session. And Vishal, let's connect offline. I'll make sure next session we do it with the same kind of energy and zeal that you guys have right now. Gunjan, what do you have to say? I think we should put the WhatsApp link, so that Vishal can join our WhatsApp group. Sure. Yeah, I would love to, sir. I would love to. Bolo. I definitely would want to contribute to the Muslim and what the religious thing is, because I have closely associated to people who are there, but today I don't want to make it about a religion thing. Yes. So rape is not a religion thing. First of all, the anger, I've gone through mixed emotions today. The two incidents that have happened, there's anger and there is shame. I feel ashamed and I don't want to hide anything today. So I belong to a family where violence is a very normal thing. A girl is born because a girl will keep on, they'll keep on giving birth to a girl till a boy is born. till एक लड़का पैदा होता है. क्यों? क्योंकि लड़का ही अभी भी फादर के चिता को आग लगाता है, इसीलिए एक लड़का पैदा किया जाता है. लड़के को आप कुछ नहीं बोल सकते, आप लड़की पे हाथ उठाते हो. आई एम गोइंग टू बी 40 this December. Right now also I go through violence at my house. I have anger issues, and the men I have got divorced twice, and
They were very abusive relationships, but I could not raise any questions. It was a mutual divorce because society क्या कहेगी? अभी तक society को पता नहीं है कि मेरा तलाक हो चुका है. The man I married, he abused me physically, and when I talk about violence, it's not a very small violence. And I was a very submissive girl. मैं जब मैं किसी I'll talk about an incident that had happened to me. When people say ना कि pepper spray ला दो या pistol ला दो, there was a person with whom I was doing training. He says, गुंजन मैं तुमको हर एक चीज ला के दे सकता हूँ. मैं तुमको हिम्मत कहाँ से ला के दूँ? Because you could not raise a hand, you could not kick. I want to say this word. You could not kick the dick of the guy who was abusing you. He was violently तुम्हें ICU तक पहुंचा दिया because you are a weak person. Getting a pepper spray will not help. Um, I planned. My mother planned another guy who she wanted to settle down with me. Things didn't work out between the families, so he mocked my photographs. They were put on the websites, according to him. I could not tell my family, so he said, "Come and meet me, have pasta with me, and then I'll let you go." That was my fault. I went there and he tried to rape me. And I'm just telling you, a weak girl like me, I I had the courage, I had the guts to do anything to his dick and make sure वो जिंदगी भर याद रखेगा. I'm just trying to tell you, जब वो टाइम आता है ना, मेरे जैसा वीक इंसान भी वो करता है. So people, and I'm talking about something in March. Another time my mom wanted me to get married. This particular guy, second day says, Gunjan, I love you. I really have fallen in love with you. I've got care for you. And one day or 2 days, I was involved into my TikTok videos. He said, तुमने तो 3-4 बार मुंह मार चुकी हो, 5वीं बार मुंह मारने को तैयार हो. Just because I'm a female and I want to live my life happily, men don't take it nicely. Even now, I have to struggle with violence. I have zero tolerance to violence. So, this rape and this violence is not about a gender, it's not about a faith, it's not about religion or a gender. Men also get abused, would be getting abused, but saying that female have a threat and threat बाहर वालों से तो आप लड़ लोगे, घर वालों से कैसे लड़ोगे? ये जो घर में दरिंदे बैठे हुए हैं उनसे कैसे आप लड़ोगे? And when you get raped, पेपर स्प्रे नहीं हेल्प करता. यू हैव टू गेट द करेज एंड आई एम टेलिंग यू, अगर मेरी जैसी लड़की उस मोमेंट पे वो कर सकती है, you will get the courage because you don't want anybody to do that to you without your will. And I just want to say one thing, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. They didn't support me to file an annulment kit with the person who did something wrong with me. Uh, both the marriages were on a mutual divorce. Why? Because वो उन लोगों को लगता था कि यार सोसाइटी को पता नहीं लगना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एफआईआर लॉन्च कर सकें. I was drugged. People say why I am attached to Sushant because I was drugged. I was an FIR was done against me. I was told that something happens to me, all the blame will come to my family and my brother. And my parents didn't want to take me back. So these incidents that are happening is basically, first of all, we have to teach our fathers, leave alone brothers. मेरा भाई तो मुझसे छोटा था, मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी. आज की डेट में मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं किसी किसी के साथ भी होने नहीं देना चाहती. मैं रोती हूँ बट माई टीयर्स आर माई स्ट्रेंथ एंड आई एम सॉरी. आई डोंट नो. You have nothing to be sorry about, Gunjan. I said wrong words, but I don't know. Nothing to be sorry about. I think we should all applaud the Exactly. courage to come onto a Exactly. platform You have and talk nothing to about be it sorry openly. about. Absolutely. And this is the, I'm so That takes a glad lot you of spoke courage. up. I am so glad you spoke up. Thank you. Thank you for Thank speaking you, up. Gunjan, Like, for sharing. seriously. Now, That is one Very of the strong. reasons why You're a strong that woman, is man. every You are man, strong and courageous. or anyone who And thinks of another person as weak, forget, like Gunjan said, it's not man or woman. To anyone who thinks of other person as weak or another person as below
you or me. Right. It's Just a because I'm a mentality soft. problem. Exactly. It's a problem with our mentality. It's a problem with our way of our structure. I've listened to Sadhguru address this, and I see what he's saying. It's when humanity is shifted from its center, these things are bound to happen. It's about bringing humanity back to its center, to its core. And until that happens, these things just unfortunately is are going to happen. No, But really, thanks, but Nikita. And you are real a men strong, who you are truly a respect strong and woman. cherish them. Let me please. She's a very strong woman. I can say that at least there is a woman who kicked the hell out of a man. And let me tell you कि अगर कोई बंदा एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है, you know what? जब आपके पास शब्द नहीं होते हैं, जब आपके थॉट्स खत्म होते हैं, जब आपका दिल खाली होता है, then only तब सिर्फ ऐसा होता है इंसान के साथ कि वो आपकी नीयत पे हमला करते हैं, आप पे हमला करते हैं, जब उनके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता करने के लिए. So you have proved this that the man does not get any minds or anything to get discussed with. Okay, and you have nothing to be, fear upon, and you just tell me. No, no, I'm not I'll be afraid. sure to be. Actually, no. The All right, point is, you should at time on होना भी social नहीं चाहिए. platform, no social platform, you are supposed to choose your words, but I did not want to choose my words, and I Gunjan, wanted to. that's the difference, right? That's the difference. कि ये platform आप ही का है, आप ही के लिए बना है. I know there are certain times Absolutely. when you have to maintain certain kind of words, but this came out from your heart. I think you really wanted a platform. You really want not even a platform. You wanted a place. वो कहते हैं ना, मैंने कई बार एग्जांपल देता हूँ चरणप्रीत कौर का. She came to a bathroom while her 3-year-old kid was sleeping in the middle of the night. उनको कोई नहीं मिल रहा, उनको अपने हस्बैंड से भी वो बात नहीं कर सकती, कहीं पर नहीं बात कर सकती. उनको लगा यही प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद करके हेडफोन ऐसे हाथ में पकड़ के, वो दिन था और आज का दिन है. मैं टाइम नहीं देखता, चीजें नहीं देखते हम लोग. हम लाइव आते इसीलिए ताकि आप जैसे लोग जिनको एक बोलने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो ये है. तो प्लीज नो अपॉलॉजीज, बट यस, हैट्स ऑफ टू योर करेज. क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो उन प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनेस्टली बात कर सकें. सो आई थिंक दैट इज मोर करेजियस ऑन योर पार्ट. forget this platform. And I think going forward also, right, मैंने I've acknowledged this in the past. वन ऑन वन पे भी हमारा जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ उस पर भी मैंने बताया, और आज मैं पब्लिकली भी बोल रहा हूँ, राइट गुंजन. I think since day one I have started watching you. I've seen what you are doing. It takes a lot of courage, Gunjan. Ek average, I'll be very very honest, right? I wish I could instill the same kind of feelings in my daughters, and I would encourage कि वो parents जो देख रहे हैं कि ये है वो guts जो हमें अपने बच्चों में, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, सही एक डायरेक्शन देनी है ताकि they speak up at the right time. We cannot just keep quiet and just जैसे मैंने शुरुआत में भी एक चीज बोली, राइट. शुरुआत से हम ये देखते आए हैं, बॉलीवुड में बहुत दिखाया जाता है, लड़की हुई किचन, कुकिंग तो सीख लो, ब्रेक हुई, वेकेशन हुई, रोटी बनाना तो सीख लो. अरे कभी किसी लड़के को बोला कि यार जा किचन में जा और रोटी बना के सीख, कल को तेरी बीवी के लिए तेरे को बनाना? कभी नहीं होता ये, राइट? क्यों? व्हाई दिस डिस्टिंक्शन? So hats off to you, Gunjan. I really commend you for speaking up. और यही मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूंगा कि we should all learn from this. अपना अपने आप को strong करो. Society आपको strong करने आए ना आए, you need to find that opportunity for yourself. And of course education, एक जो बहुत जरूरी चीज है हमारे घर की, जो वो एक bookish education नहीं, book education outside of those books is also very important and very relevant. So I want to be mindful of the time. Yes, Vinita, last comment maybe. Yes, Gunjan, sorry, आप कुछ कह रही हैं, बोले. I'll just end it to. Yes, I'll take only 1 minute. yes, First of please. all, to your surprise, my father is a doctor and my mother is a teacher. And since the time she got married, she's been tolerating all this violence. Okay. Second thing, people who say that I've got this courage, and वो ना मैरी कॉम का डायलॉग था, डर से इतना मत डराओ कि डर से डर भाग जाए. पूरा देर ये एक कंजर्वेटिव सोसाइटी की सोच थी, गुंजन चुप रहो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए. अब इतना यहाँ तक हो गया है. सो पीपल हु टेल मी ना कि तू इतनी ब्रेव कैसे, मैंने कहा बर्दाश्त का यहाँ तक आ गया. अब सब कुछ खो दिया है, मतलब लोगों ने इतना कुछ बोला है कि अब
I care damn what people think about me. तुमने तो already मेरा character assassination करा हुआ है, तो इससे बुरा तुम कर नहीं सकते. So either I can keep the society happy or I can keep myself happy. Sometimes my father says that I don't respect him, so I cannot respect a person who has constantly for 40 years has insulted me. So he says the day he dies, it won't affect me. But yes, as a human, it will affect me. But I know if I die before him, he'll have no emotion क्योंकि हमने कोई इमोशन बनाया ही नहीं एक दूसरे के लिए. तो वो इमोशन एक लड़की के लिए उस माँ के लिए आते हैं जिसने स्टैंड लिया है. मेरे लिए उस अपने फादर और भाई के लिए नहीं आ सकते. सो आई फील दैट द वे यू नर्चर अ प्लांट, nurture, we don't say we give us special treatment, give us humane treatment. We want human treatment. We are supposed to be respected the way we are, because if we are not respected, we will not respect you. So वो एक दिन बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और वो ये बांध फटेगा और मेरा वो फट गया है, एंड इसीलिए मैं शायद इतनी वोकल हूँ. एंड दिस हैपेंड फ्रॉम मार्च ओनली. सो दैट्स इट. Okay, thanks. Did you ever? I'm sorry if I did not heard it, but आपने कभी उसका रेजिस्ट नहीं किया, उसको रोका नहीं, अपने समाज को नहीं बताया? इतने सारे लोग होते हैं आपके आसपास. I'll tell you one thing. The reason at the age of 23, I had a very nice childhood. I was not with my I was born and brought up by my grandfather, but because of some person's malintentions, I was alienated, and he died in 1 year. I got suicidal tendencies, and I have no shame. I jumped from a third building wall. I have 14 stitches on my wrist. For 1 year I tried just Holy. committing suicide. So I can laugh about it. So the thing is, I got married just because I wanted to escape violence. And today I'm telling you, karma also says, mystic law says, the situation you're going to try and overcome, I've met a worse person in my life. So, You're a brave woman. Great. I love, the thing is, because he was the first guy, I fell madly in love with him. And he took advantage of that love because उसने that's a very long story, but yes, I जिसके साथ को प्यार होता है ना, करेज नहीं होती, आप उस इंसान को मार सकते हो. मगर एक टाइम आया कि किसी ने करने की कोशिश की, और जब करने की कोशिश की, मैंने उसको दिखाया कि मेरी इजाजत के बिना यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी. एंड आई एम श्योर वो जहाँ भी होगा ना, उसको जो मैंने किया है ना, वो जिंदगी भर अपने आप को याद रखता होगा कि उसको एक ऐसी लड़की मिली थी. All right. All right. Nice to see you smiling. Great. Last 5 minutes or 7 minutes. Please, we need the last comment. Yes, please. Varun, please, can you please tell me how can I don't know how to say that. लेकिन WhatsApp पे अगर मैं जुड़ना चाहूँ तो कैसे जुड़ सकता हूँ? Chat के अंदर एक link paste किया है अर्जुन ने. Please go ahead and उस पे click करें chat में. All right. And otherwise, मेरा number यार बहुत public है. You can reach out to me directly. Oh, looks like he connected. All right. Yes, Vinita, you were saying something, and after that, Ramanji, you're gonna. Yes, I have a message to all parents of young children. I'm a mother of a 4-year-old, and I do this with my child. And it's a message to every single parent who's watching this, who have very young children. Teach them this from the beginning, that what is okay and what is not okay. I teach my daughter all the time, where is it okay for people to touch her and where it's not okay. And if anybody does, she's supposed to say, stop it, I don't want it. And if they don't listen to her, she comes and finds an adult. She comes and finds a grown up and tells them. And I have promised her this, that no matter what, I will stand by her, I will believe her, and I will stand by her. And that's a message that I want to give to all parents of young children. Doesn't matter girl or boy today. All the parents of young children, stick with your kids no matter what. Right. That's it. Cool. Thanks, Vinita. All right. You're welcome. Raman ji, आपको मैं last में लेता हूँ. Deepak ji, please. What do you have to say? Namaste. बस कुछ नहीं, सुन रहा था मैं बहुत देर से. I was busy. अभी भी काम ही कर रहा हूँ. पेंटिंग चालू है. So नहीं, बहुत अच्छी बातें निकली है. आउटकम यही आता है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है. जैसे विनीता जी ने अभी कहा कि वो अपनी बच्चियों को सिखाती है. In London here, it's being practiced in school. So our system should change overall.
अपनी आंखें खोलो और आपका नाम, whoever went through whatever you said, I'm telling you, I have a sister younger than me, and she was never ever thought कि वो घर पे लड़की है या लड़का है. My dad works with my mom. He cuts onions, he peels potatoes, so they help each other. I've never seen raising an eyebrow also on my mom, my dad. He's such a timid but very intelligent guy. He doesn't smoke, he doesn't drink. If you give him a Coke, he will burp 20, 30 times. He's like this kind of a person. So I've grown up in a... My father always said one thing is that before anything, before any religion even, humanity is the first thing that you should believe in. And for me, what they have taught me, I think before God also, it's our parents. Because they taught us walking, talking, what religion is. Now the practice starts from the grassroots level itself, as Vinita ji said, that parents should be aware to talk openly, not shamedly. Yeah. So if you say a kid, no, this is wrong, go away, that's a wrong message you're conveying him. And unfortunate sometimes, if he happens to see something which is happening in action, and then he goes out and then he thinks, he says something else, he's doing something else. So awareness should be there that a person has a difference between male and female gender, yet they are equal. We studied in a school where girls and boys used to study together. So still the society is there, the core society, where they always say, शादी से पहले बिंदी नहीं लगाना, skirt nahi pehenna, shalwar kurta pehenna. So you are taking out the freedom, but as simultaneously, person should also be aware to respect each other. So there are a lot of girls they con, there are a lot of guys they con. So it's a balance where even the Earth's axis is tilted, you know. And that's where it's controlling everything. So we will have these flaws, but we have to encourage, and more awareness that we create is overall good for everybody. You should be standing all the time, ma'am. Every time. My sister is a divorcee. I'm telling this live. Ask her. She has been a single mom, but hats off to her. She's been courageous. She's far more intelligent than me. And she's always got that respect. And I think being younger or whatever, the respect comes from inside. Even if I have to touch her feet, I will do that. It's a metaphysics. किसी के पैर छूने से आप छोटे नहीं होते. मेरी छोटी बहन है, मैं अगर उसका पैर भी छूना पड़े मैं छूऊंगा. Because she's such a great, because I know her thoughts. Never did anything wrong, but things happened wrong with her. Got it. But my parents and we all stood together. That is the strength. My family is my example. So I always tell people, be human first, understand each other, empathy, and don't start judging. We come to the conclusion very quickly. Very quickly. If somebody you don't know and you're talking to him, you're very nice with him and all, and suddenly he starts, exploring himself. It becomes comfortable. The more he becomes comfortable, the more we start judging, and that's the fact. जितना हम किसी को जानते हैं, हम judgment करना चालू करता है, वो तो ऐसे ही करता है. But then put yourself also into somebody else's shoes and think why he does. Here now, I'll tell you, I'm working with a lady who runs a nursery. Here, if the boy is quiet, they start talking to him. They start making him laugh. Because if he takes that nature, he carries on along with in the long term. And sometimes people are timid, shy. So they make them aware to talk, be vocal, be spoken. Yeah. I'm about to go and see somebody. I'll lock him there. Yeah. So, anyway, not much to say, Sure. Varunji, but Nahin, hats thank off you to so you, much. sir. Sir, I'll tell you one, this is the platform. This is the platform where people can speak the heart out. And whatever shows there are, they are monologue, not a dialogue. Here we are having a dialogue. Yeah. And We'll hats continue off to to have this this. lady and any other more lady who will be seeing this and she likes to come courageously.
We stand for justice. This platform is for everybody. Yes. For me, I think so. You are our voice, Varunji. Sure. You are immaculate. You are very pure soul heart. You have done whatever you have done is openly, with open things. No matter वो जो आपको प्यार मिलता है chats पे. Smiling कैसी चल रही है सर? सर बहुत अच्छी चल देख रहे हो ना, चल रही है. Very good. Keep जैसा भी smiling. टाइम चल रहा है, जो भी जाता है, I still keep your words. I'm gonna keep the smile on. Yeah, and ma'am, hats off to you. It takes a courage to come and talk, and you have done a good job. All right, You've done a very good job. Yeah, last के 2 minutes. We'll do Thank another you. live tonight, my night, which is in another 12-13 hours. दोबारा करेंगे क्योंकि I think this is not enough time. But yes, please Raman ji, please go ahead. And thank you जी so much वरुण जी दीपक जी, एक बार फिर नमस्कार। से आपकी मोटिवेशन का. रमन जी आप नमस्कार. जी आज तो ऐसी वो एक इंसिडेंट सुना, आज मैंने, मेरे पड़ोस का इंसिडेंट है, वो गुड़गांव के पास में ही है वो जगह, बल्लभगढ़, वो मेवात के जो लड़कों ने किया, वो जो बड़ा तकलीफदेह था। जिसके घर में बहन है, बेटी है, उसको तो बहुत तकलीफ होगी। पता नहीं कैसे संस्कार के लोग हैं जो ऐसा लड़कियों के साथ कर देते हैं। बहुत अफसोस होता है देख के, सुन के। हालांकि वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है उस एरिया का, लेकिन ऐसा होगा, इस तरह से होगा, ये तो अभी पता नहीं था। एनीवेज, एक एज यूजुअल आपके शो में एक कविता सुनाता हूं मैं आकर के। तो इफ यू अलाउ, मैं एक कविता लिखी थी मैंने, जो वो एक बच्ची के साथ हुआ था पहले, जो हैदराबाद की डॉक्टर थी, उसके साथ हुआ था। तो इक्वली रेलेवेंट है, मुझे लगता है कि ये कविता आज सुनानी चाहिए। सीरियस थोड़ा सा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो इसके बाद दूसरी सुना दूंगा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एक सुनाता हूँ। Sure, please. हम अहिष्णु थे नहीं, हम अहिष्णु थे नहीं, पर अब बनना पड़ेगा। इस सोए समाज को जगाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम अहिष्णु थे नहीं, पर बनना पड़ेगा। इस सोए समाज को जगाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं अहिष्णु बनूंगा इन भेड़ियों के खिलाफ। हाँ, मैं अहिष्णु बनूंगा इन भेड़ियों के खिलाफ। इंतजार अब खत्म, बस अब होगा इंसाफ। जैसे उस बेटी को मारा, जैसे उस बेटी को मारा, इनको भी मरवाना है। चीखें सुननी है इन कमीनों की, इनका अंग अंग कटवाना है। जैसे उस बेटी को मारा, इनको भी मरवाना है। चीखें सुननी है इन कमीनों की, अंग अंग कटवाना है। बंद कमरों में फैसला बहुत हुआ, बंद कमरों में फैसला बहुत हुआ, अब और नहीं। जिस्म काट दिया जाए इनका, इससे कम मंजूर नहीं। बंद कमरों में फैसला बहुत हुआ, अब और नहीं। जिस्म काट दिया जाए इनका, इससे कम मंजूर नहीं। अगर अब चुप रहे तो याद रहे, अगर अब चुप रहे तो याद रहे, कल बारी तुम्हारी है। अगर अब चुप रहे तो याद रहे, कल बारी तुम्हारी है। वो बेटी किसी एक की नहीं, सबकी है, हमारी है, सबकी है, हमारी है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया. Yep. Very मैं relevant. तैयारी तो थी वरुण जी, एक और कविता थी, उस पर तैयारी थी, लेकिन आज जो हुआ उसको तो बिल्कुल ऐसा सोच के तकलीफ बहुत थी, बहुत तकलीफ थी। तो लगा कि ये आज सुनानी चाहिए मुझे। बिल्कुल. वो तो रोज चलेंगी हमारी, सुनाता रहूंगा। व्यंग भी चलेंगे, कविताएं भी चलेंगी, ये आज के लिए जरूरी थी। आज हाँ, इसी पे करते हैं खत्म, बिकॉज आई थिंक लाइट हम इसको अगले रात के सेशन में करेंगे. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव इट ऑन सच अ थॉटफुल नोट के हम सबको भी सोचने की जरूरत है कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी गलतियां क्या हैं, और इसके आगे व्हाट इज द ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या क्या सुधारना है. I think it starts from within. Let's evaluate, let's think about it, and let's act according to. But एक बार फिर से thank you everyone. हर किसी के लिए, we will continue to do this more often. I think this is the need of the hour. दिख रहा है कि सबको एक ये आवाज के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए. तो I think we will continue doing it. हम लोग Monday, Wednesdays को अब रेगुलर आएंगे, and we will share the times, and we'll do it कीपिंग इन माइंड सारे टाइम जोन्स. बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उनके लिए हम रात को भी करेंगे. सो
एक बार फिर से थैंक यू सो मच. अनफॉर्चुनेटली यस, निकिता केस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इट इज रियली बहुत लोगों को गुस्से में ला दिया है. वैसे ही बहुत कुछ हुआ है जिस वजह से लोग वैसे ही बहुत गुस्से में हैं. But I think this was again something which we really did not expect, especially at this time. So I think let's keep speaking, let's keep talking, and let's keep rectifying few things जो आज तक नहीं हुई. This is giving us all an opportunity to correct few things in our community, and especially at our homes. On that note, thank you so much again. We'll see you guys very soon, and we'll speak more. Thanks and Jai Hind. Namaste. Thank you. Thank you. Bye.